वरुण धवन कियारा अडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। बैंड बाजी के साथ सितारों ने एंट्री कर सभी को एक्साइट कर दिया। धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च पर बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो आइए डालते हैं इस ट्रेलर लॉन्च के टॉप 5 हाइलाइट्स पर एक नजर। कियारा ऑन हर मैरिज। एक्ट्रेस कियारा अडवाणी को जब मीडिया ने उनसे शादी का प्लान पूछा तो एक्ट्रेस ने दिया ऐसा जवाब कि हो गए एक रिपोर्टर की बोलती बंद। डालिए एक नजर। कियारा जी, स्टेज पे जितने भी लोग हैं सभी की शादियां हो गई है, जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ सभी वेल सेटल हैं। तो आप बताइए कि इनकी नहीं हुई है, भैया तो क्यों? अच्छा, सॉरी सर, आपकी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कियारा जी, और मेरी शादी के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा, मैं 50 का होने जा रहा हूँ। क्या सर क्या लगता है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ? आप सर शादी के काबिल हैं आप। भैया तो बाल भी खड़े करके हम भी शादी कर सकते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हैं सर। शादी कोई टैलेंट नहीं, मजबूरी होती है सर। कियारा जी आप बताइए, कोई प्लान्स? बिना शादी की भी मैं वेल सेटल्ड हो सकती हूँ, राइट? मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं काम कर रही हूँ, कमा रही हूँ, खुश हूँ। करण जौहर ऑन साउथ वर्सेस बॉलीवुड डिबेट। हर जगह साउथ वर्सेस बॉलीवुड इंडस्ट्री का बोलबाला है। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहा है। ऐसे में अब करण जौहर ने भी जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च पर इस मुद्दे पर राय रखी। करण, आप जब भी बोलते हैं कुछ भी तो बहुत ही ध्यान से मैं सुनता हूँ, क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं तो इंडस्ट्री का चलन भी बदलता है। जितना खूबसूरत आपकी फिल्म का ट्रेलर है उतना ही खूबसूरत स्टेज भी है आज। तो आपने और कियारा ने जब बातचीत शुरू की तो एक बात जोर देकर कही कि हिंदी फिल्म ट्रेलर, हिंदी फिल्म, इस तरह की बातचीत थी। तो ये जो हिंदी फिल्म पे जोर था, क्या ये बताने की ज़रूरत थी कि मतलब थोड़े दिनों से जो दूसरी फिल्में हैं, साउथ की फिल्में, वो अच्छा काम कर रही हैं तो हम भी अच्छा करेंगे? मतलब मैं इसको समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा तो नहीं, हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा का हिस्सा हैं। तो जब RRR और KGF और पुष्पा ने इतने कमाल धमाल का बिजनेस दिखाया है तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा है, इट इज़ इंडियन सिनेमा। हम ये जब मैंने जब एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल दोज फिल्म्स, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने एक्चुअली इंडियन सिनेमा का दर्जा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्रशांत नील साहब, राजामौली सर, सुकुमार and KGF, all that has just completely told us कि हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो सकता है और इतना हम आगे जा सकते हैं। जब हमने हिंदी को स्पेसिफाई किया तो इट इज़ रियली अ फंक्शन ऑफ टेक्निकलिटी, क्योंकि हम जो है कि हिंदी सिनेमा में अभी लास्ट हफ्ते अब गंगूबाई ने इतनी सॉलिड बिजनेस की थी, भूल भुलैया ने इतनी सॉलिड ओपनिंग ली है, और अब हमारी यही इच्छा है, आशा है कि जुग जुग जियो भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन जाए। हम ये भी चाहते हैं कि हर भाषा की फिल्म चले और हमारी फिल्में भी चले, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एंटरटेन करते हैं तो वो चाहे कोई भी भाषा हो, तमिल हो या तेलुगु हो, मराठी हो। अगर आपने नोटिस किया, पंजाबी सिनेमा ने इतनी बड़ी हिट दी है लास्ट वीक, फिर मराठी सिनेमा उसी हफ्ते ने भी इट डिड सो सुपर्बली। तो वी डोंट वांट एनी लैंग्वेज and to be kind of compared to each other, but we just want to say कि we are proud of Indian cinema, और हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सिनेमा अभी आगे बढ़ते जाए, and we are always on the entertainment global map. Karan, do you mean to say that there is do you mean to say कि there is no competition here, Karan? There is no, you don't believe in competition between South and not at all. Hindi cinema. In fact, if you remember, ma'am, in 2000, many years ago, I presented Bahubali. In fact, I had that huge faith in the power of cinema. There is no competition between the same industry. How can they be? We grow together. We don't, to compete would be completely not servicing the requirements of entertainment in the industry. We have to be one collective unit, and Rajamouli sir has said that many times. We should be one cinema. And in fact, the best crossover is the crossover that has happened recently, is when the South has done such expansive business in the North. That is crossover. Going to any festival, winning an Oscar does not matter to us. We want to grow as Indian cinema, and that has been proven time and again. In fact, when these things happen, I feel it unites the country even more. And that's the most important purpose I think cinema can do, you know.
unites the entire country together. So I think it's amazing. Anil has special tips for Varun. Newlywed वरुण धवन को अनिल कपूर ने दिए खास टिप्स। शादी को लेकर कही ये बात, डालिए वीडियो पर एक नजर। अनिल जी आपको कोई टिप्स नहीं देंगे, आप रमेश जी के पास जाइए। So this is Sohail from Instant Bollywood. What's up, Sohail? अनिल जी अभी कुछ वक्त के बाद like you know you are going to become Nana. तो ये जो वर्ड है जुग जुग जियो, आप कितना वेट कर रहे हो इस वर्ड को बोलने के लिए? देखिए अभी पूरी दुनिया के सामने आप मुझे नाना बना रहे हो। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उसको मैं इस रिलीज़ के बाद ज़्यादा इसकी, क्योंकि इस फिल्म में मैं सिर्फ फादर हूँ, नाना नेक्स्ट पार्ट 2 में नाना बनूंगा, बट डेफिनेटली इट्स बहुत खुशी की बात है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वांट ऑल योर गुड विशेस to Faizan and everybody. Yeah. No, before going ahead, I think I'm also seeing Komal ji. JugJugg Jeeyo. Komal, one question you have to ask him. I'm seeing you after so long. मेरा क्वेश्चन है कियारा जी को also. कियारा जी each and every film. इंट्रोडक्शन इन स्टाइल। जुग जुग जियो के धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च पर करण जौहर ने किया सभी का धमाकेदार इंट्रोडक्शन। आखिर कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। Okay, so I have a very special relationship with the actor I'm going to call on stage. I've been with him on so many stages that I possibly have forgotten. We've lost count, from being on reality shows to award shows. He's had the gall to say so much this Paul to me and get away with it. He actually has been amazing, and I always say that every time I've hosted with him and been on a stage, he's been amazing and the easiest to work with, and I believe this is a breakthrough moment for him at the movies. Ladies and gentlemen, put your hands together for Manish Paul. I grew up watching their movies. I grew up watching Rishi Kapoor and Neetu Singh movies. I grew up loving them madly, to the extent that I made my father buy me all those sweaters that Chintuji wore right through his amazing and prolific career. Every time I saw them, I felt like they were mine, like, you know, like they belonged to me. And many, many years later, I remember in an emotional conversation with Neetuji, I said, you have to come back because you're beautiful, you're special, and there's no one more amazing. You light up the screen. And she has. She lit up our film, she lit up the screen, she came back with love in her heart and a legacy that is unmatchable. Ladies and gentlemen, put your hands together for Neetu Kapoor. Neetu ji. I love you. I love you too, so much. And I'm so happy you're here and everything worked out. Undoubtedly my first friend in the business. And I mean that. Me and Aditya Chopra were at a party once and no one was talking to us. And literally because we were like, you know, young and just excited to be at a film party. And then there was a superstar who walked towards us and only hung out with us. From then on, I felt love for him. That love just grew into more love. Respect remained, but the fact that he is the youngest man I know even today and works with the energy of a millennial just speaks for itself. There is nobody, and I repeat, nobody that can match the energy of this outstanding artist, Anil Kapoor. So my journey began with lust, and then she became an absolute must. Because everything we have done with her has been immensely successful. So I think she is definitely the lucky mascot that Dharma Production has. She's given us good news, even though she's been guilty many a time. She's a blessing, literally a blessing, just like JugJugg Jeeyo. And every time, each and every time she has been on screen, she has been spelling pure magic for us at Dharma Productions. And now with a massive weekend behind her, her lucky streak continues. Please welcome Kiara Advani.
इसके बारे में क्या कहूँ मैं? लिटरली अगर मैं कहूँ कि मेरे सामने बड़ा हुआ है, and I have been like a proud principal parent, because when this student flew like literally flew with box office bonanzas back to back, it made my heart swell with pride. He is the most lovable person I know, and the single most annoying as well. I mean, literally, I think I speak to him more than I speak to my mother, Yash, Ruhi, and every member of Dharma Productions put together. My phone rings every 5 minutes with Varun Dhawan flashing. I get career advice from him. I get marketing advice from him. I get emotional advice from him. So he is not only my son, he is also my parent. Please put your hands together for our beta number 1, Varun Dhawan. स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन डिवोर्स। इंडस्ट्री में सेलेब्स का डिवोर्स होना एक बड़ा मुद्दा है। रिसेंटली समंता, सोहेल खान जैसे सेलेब्स ने डिवोर्स लिया। ऐसे में अब इस मुद्दे पर अनिल कपूर ने भी अपना रिएक्शन देते हुए बहुत ही सही जवाब दिया। डालिए एक नजर। ट्रेलर में देखने को मिला कि आप डिवोर्स लेने पर आमादा हैं, लेकिन असल जिंदगी में अनिल जी आप और नीतू जी आप एक बहुत ही कहते हैं ना कि सॉलिड जो मैरिज होती है, मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसकी आप लोग एक मिसाल रहे हैं। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या आम जिंदगी हो बहुत बढ़ गई है। तो आप एक सॉलिड एक अच्छी शादी के लिए या मैरिज इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सवाल अनिल जी आपसे बिल्कुल बनता है। अभी हाल ही में आपकी एनिवर्सरी भी थी जी। बस मैं यही कहूँगा कि I think everybody is happy in their own space. Whatever divorce, I'm not against divorce at all. अगर दो इंसान, if they don't really get along, I think they should part and amicably. There's nothing wrong in that. And if you live and you're happy with your marriage, why not? And if you want to be a bachelor all your life, why not? अगर आज लड़का नहीं शादी करना चाहता, लड़की भी नहीं शादी करना चाहती और खुश है, I'm happy with that. I have never ever, I feel today's world is such that everybody should live happily, no matter क्या है उनकी what is their liking, what is their dislikes. That's up to them. That is their choices. They should make their own choice. And I have believed in it, not now, from the time I came into my senses. Yeah. वेल तो ये थे जुग जुग जियो के ट्रेलर लॉन्च के टॉप 5 हाइलाइट्स। इन पर आप हमें बताएं अपनी राय, एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।